Assalamu alaikum, dear students. Students, we are starting with unit number 13, that is amines, and this is the last chapter for your organic chemistry. As you know that few chapters are omitted from the syllabus. So this will be the last chapter of your second textbook also. Okay, amines are the derivatives of the ammonia. Ammonia, that is NH3. Okay, where in nature it is found? They are found in proteins, vitamins, alkaloids and hormones. If we talk about their synthetic, how we are preparing, we are finding out it in the polymers, dyestuffs and drugs. Adrenaline and ephedrine, that is secondary amino group, are used to increase the blood pressure. Novocaine is used as an anesthetic in the dentistry. So these are the particular uses and how they are found in the nature also and synthetically also. So dear student, this is the particular notes also. You can copy it down in your classwork book. And very soon we are going to start with the practicals also. Now, if we talk about the Novocaine, we say that it is used as an anesthetic to make that particular portion unconscious for a while. We are using it. Benadryl, that is also commonly, you have heard this name many a times. An antihistaminic drug, that is tertiary amine. If we talk about the quaternary amines are the salt which are used as a surfactant. Dear student, diazonium salt are the intermediate for the dyes. Let me tell you, diazonium is a topic which is omitted this year. For your exam, this topic will be not there in the examination. So we will be not dealing with this topic. Just for your knowledge, the diazonium salt are the intermediate for the drugs. Structure of the amine, an orbital in the NH2R amine is sp3 hybridized and amine is bipyramidal. You are able to see that one lone pair of electron is there, two hydrogens are there and one R is there. If we talk about the bond angle, RNH का जो bond angle है, that is 108 degree. So which you can note down that this is the structure. And as it is having the lone pair of electron also, it can contribute to any particular element to whichever it want to bind out. Suppose it want to bind out with the hydrogen, it will be forming your tertiary group. Quaternary group. Okay. Classification. Ammonia, that is your starting material. One or all the hydrogen can be replaced by R. R, what is our alkyl group? Or AR, what is AR? Aryl group. Okay, and you will be getting the derivatives. That is starting from the ammonia, you get primary amine, you get secondary amine and you get tertiary amine. What is primary, secondary and tertiary? N के साथ कितना C लगा हुआ है? N के साथ अगर एक C, एक कार्बन लगा हुआ है तो प्राइमरी अमाइन. N के साथ दो कार्बन लगे हुए हैं तो सेकेंडरी अमाइन और तीन लगे हुए हैं तो टर्शरी अमाइन. अगर चौथा ग्रुप भी लगता है then it can be quaternary amine. Okay. Next, if we talk about the nomenclature, dear student, as I told you that nomenclature is of particularly two type everywhere. That is what we have to see. We are having the common system and we are having the IUPAC system. If we talk about the common system, we have to write alkyl amine. And if we talk about the IUPAC system, we have to write alkane amine. It is very simple. See the first example, CH3, CH2, NH2. Alkyl amine, we will write ethyl amine because there is two carbon. Okay. And same if we talk about the alkane amine, it is ethane amine. Very simple. Now we are having nitrogen connected with all the three hydrogens are replaced with methyl group. We call it as a commonly trimethyl amine. And if we talk about IUPAC name, we have to write N, N dimethyl methane amine. This is the how we are naming it. Okay. Next, we are having the example that is hexamethylene diamine. We have used it for the preparation of nylon 6,6 if you remember. Okay. So this is your diamine which we are using. Hexamethylene, hexa. 6 times you are having CH2. Okay. And if we talk about the IUPAC name, it is called hexane 1,6-diamine. Similarly, you are having the aryl group also, that is a benzene ring. In benzene ring, if you are going to have NH2, it is called aniline as a common name. And in IUPAC also, it is certainly used with the aniline name. Along with that, this name is also correct. That is benzene amine. Benzene amine is also the correct name. You can go with. Next, dear student, preparation. The number one preparation is very simple, but it is very important, asked many a times. Reduction of NO2 group. अगर हम prepare करना चाहते हैं
एमाइन, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रोबेंजीन ले सकते हैं एंड वी हैव टू गो विथ हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी अलॉन्ग विथ इथेनॉल, इट विल गिव यू एनिलीन, दैट इज ओ पूरा जो है O2 निकल जाएगा और वहां पे H2 लग जाएगा. यू कैन ऑल्सो यूज SN प्लस HCl और एल्स यू कैन यूज Fe प्लस HCl. So dear student, this preparation is very simple, but let me tell you, SN plus HCl, this is asked many a times. So you have to note down very simple, that is your reduction of nitro group. नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन सीधा हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग द एनिलिन. सेकंड प्रिपरेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. व्हाट आर अल्काइल एमोनोलिसिस? एमोनोलिसिस करेंगे हम किसका, अल्काइल हैलाइड का. अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, RX का क्या हो जाएगा, they will be generally converted into the amines. What we have to use, we have to use the ammonia. So we are going to start with this preparation. Let us see in detail. So here comes with your second preparation, that is ammonolysis. Now see ammonia along with that methyl chloride. तो क्या हो रहा है, मिथाइल क्लोराइड का जो Cl है वो अमोनिया के H के साथ निकल जाएगा और वहां पे लिखा हुआ है HX, मतलब कि क्या, HCl. तो आपका क्या बनेगा वहां पर, your R will be joined over there and you will be getting your primary amine, that is your NH2R. Now again once more you are going to use the alkyl halide, फिर से एक HCl बन के निकलेगा, फिर से आपके यहाँ पे 2 R लग गए. Now you have to go for taking third time also and you will be getting your tertiary amine. चौथी बार भी आपका अल्काइल ग्रुप वहां पे हम ले सकते हैं. वाई, बिकॉज वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन दिस केस HCl विल नॉट लिबरेट आउट. रीजन बिहाइंड इट, वी डोंट हैव एनी हाइड्रोजन इन द टर्शरी ग्रुप. आपके टर्शरी एमाइन के पास एक भी हाइड्रोजन ही नहीं है. तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो RX है वो वेलकम होगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन possesses positive charge and chlorine possesses, that is your X possesses negative charge. So dear student, this is called ammonolysis of alkyl halide. Quaternary ammonium salt, see RNH3X, तो N के ऊपर प्लस चार्ज है, X के ऊपर माइनस चार्ज है. When you are using NaOH, when you are using it, you will be getting the RNH2 plus H2 plus NX, that is your primary amine. Number third preparation is also very simple one. Reduction of nitriles. Nitriles क्या होते हैं, C triple bond N. अगर हम उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं in the presence of sodium amalgam. What is sodium amalgam? NaHG in the presence of ethanol. So dear student, यहाँ पे जो है आपके दो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और दोनों बार दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के पास एक एक हाइड्रोजन लगेगा 2 बार, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाएगा into RCH2NH2. So this is your reduction of the nitriles. If we talk about reduction of the amides, what are amides? C double bond O NH2, CONH2 को हम एमाइड्स कहते हैं. नाउ सी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 4 हाइड्रोजन्स हैं. तो मैंने कैसे बताया हुआ है उसको कि जब ऑक्सीजन कट होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा तो वहां पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और दूसरी बार आपका जो है 2 हाइड्रोजन्स विल बी अटैच्ड ओवर देयर. सो दिस इज हाउ पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, कि कैसे आपके वहां पे हाइड्रोजन्स लगते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 4 हाइड्रोजन है ना, उसमें से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले जाते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन गया. आर यू एबल टू से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के नीचे लिखा हुआ है वाटर. सो दैट इज हाउ इट इज रिमूव्ड ऑफ एंड यू आर गेटिंग द पर्टिकुलर amide. Now Gabriel Thalamide synthesis, it is very important word, please note it down कि ये जो है Hoffman bromamide and Gabriel Thalamide, that is very important synthesis. It is used to make primary amine. सिर्फ primary amine के लिए यूज होता है. Thalamide से स्टार्ट किया, Thalamide को KOH, that is पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, KOH का OH और वो जो आपका N दिख रहा है जो 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में है वो H निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बन के, मतलब आपका जो KOH है उसका क्या लगेगा, K लग जाएगा. फर्दर उसका करना है अल्काइलेशन, दैट इज यू आर यूजिंग RX एंड यू विल बी गेटिंग द पर्टिकुलर N ग्रुप विल बी कमिंग आउट एंड यू विल बी गेटिंग द R ज्वाइंट ओवर देयर, R लग जाएगा आपका. NOH जब आप यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि कार्बोनिल, दोनों साइड से कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक हो जाएंगे और आपका जो है H, not पूरा NaOH, only the H will be 2 times the H will be coming and joining with it nitrogen and forming the primary amine, and you will be getting your sodium thalamide. So this is the preparation known as Gabriel Thalamide synthesis. Hoffman bromamide degradation reaction, there dear student, it is again from we are taking with the amide
amide that is CONH2. इसका हमें bromination करना है in the presence of NaOH. So you will be getting the primary amine, along with that Na2CO3, and along with that you are getting NaBr plus H2O. Dear student, यहाँ पे जो alkyl group है या आपका aryl group है migrates to the nitrogen of NH2 and CO is removed out. Therefore, the product contains one carbon less than the reagent. Reagent में आपने जितना लिया है उससे एक carbon less आएगा. If we talk about the physical properties, lower aliphatic amines are gases with the fishy odor. Primary amines are liquid. Higher ones, that is higher amines are solid. Aniline and other aryl amines are colorless, but on storage, due to the atmospheric oxidation, it is getting colored one. Okay, lower aliphatic amines are soluble in water due to the hydrogen bonding. Lower aliphatic amines are creating the polarity and it will be forming the hydrogen bonding. Solubility decreases with the increase in the carbon chain as the molecular mass increases. तो जितना आपका मास बढ़ता जाएगा, जितनी कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, उतनी उसकी solubility डिक्रीज होती जाएगी. जितने कार्बन कम उतनी solubility ज्यादा. रीजन बिहाइंड इट, जितने कार्बन कम है उतने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और जितने हाइड्रोजन ज्यादा है उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा. किसके बीच में? एक के हाइड्रोजन सामने वाला जो दूसरा आपका एमाइन प्रेजेंट है उसके नाइट्रोजन के साथ, बिकॉज इट possesses the lone pair of electron. I am showing it over here how the hydrogen bonding is taking place over here. You can see it very soon coming in your next slide over here. So that is here how you are able to see. आपका अगर प्राइमरी अमाइन है तो एक ही बार नाइट्रोजन बॉन्डिंग होगा. अगर आपका सेकेंडरी अमाइन है तो आपका दो बार नाइट्रोजन सिंगल टाइम नाइट्रोजन बॉन्डिंग होगा. अगर प्राइमरी है तो बहुत बार, तीनों साइड पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर सेकेंडरी अमाइन है तो एक ही बार हो रहा है और टर्शरी है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं. Lower aliphatic amines are soluble in water due to the hydrogen bonding. Solubility decreases with the increase in the carbon chain as the molar mass increases. Higher amines are insoluble. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइंस आर मोर. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है. जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम उतना बॉइलिंग पॉइंट कम. तो आपका सबसे कम किसका होगा? टर्शरी अमाइन का. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट possess any hydrogen bonding. Is it clear? So dear student, this is the topic over physical properties. In our next video we are going to start with the chemical properties.